also he got the Lifetime Achievement Award in 2010 for promoting health and medicinal research. Dr. Gopal is a former colleague of Honorable Dr. APJ Abdul Kalam, the ex-president of India, and who admired for his research work in drinking water management and social mission. All over the country, with his team, he has organized many training programs and awareness camps about water quality, monitoring and surveillance for participants of center and state government, different field people, and he also acted as the president of Indian Desensitization Association. He also he is also presently acting as the chairman to the Research Advisory Board, Indian Research Institution for Integrated Medicine, Howrah. He is also chairman to the Government of India BSc, Jodhpur. He is chairman to the Research Advisory Committee for the School of Oriental Medicine, the Global Open University. In this way, he has many connections with different important organizations and universities and management institutions all over India. And at present, he is acting as a chairman to different boards. Now I request Brother Ram Gopal to please give his lecture. This is for forward, backward. Paramadani Ramesh Bhai, distinguished dignitaries on the dais, Vidyalaya Parivar, and my dear participants. It's an honor for me to share my experience as a research scientist in the spiritual world. So, presently, as I said, I am the chairman of the Research Advisory Committee, Indian Research Institute of Integrated Medicine. Last 32 years, we have treated 2.8 lakh patients on pro-nature therapies, drugless therapies, where spiritual healing is a part of it. On the de-addiction of all the addicts, the spiritual healing has played a great role. And I am here, my director, Dr. Devashish Bakshi is over here. He is a medico over here. He is running the institute in Howrah. I am associated. Here I seek to develop spirituality in research. We seek collaboration with research centers like Prajapita Brahmakumari Ishwari Vishwavidyalaya. That is I propose here. Next please. Here, the subject, researching within a roadmap to a new world order. As a research scientist, I wish to propose what should we do in this direction. And the subject I have chosen कि विश्व की क्या समस्याएं हैं और आध्यात्मिकता किस प्रकार उनके समाधान में अपना योगदान निभा सकती है। एक्चुअली हम सभी सुखी जीवन जीना चाहते हैं, पूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, जीवेम शरदय शतम 100 वर्ष तनाव मुक्त जीवन जीना चाहते हैं। लेकिन जब हमें न उस पथ का पता है, न रास्ते का पता है, न उस पर कैसे चलें ये पता है, तो अपने अपने हिसाब से, अपने अपने संप्रदायों से, अपने अपने गुरु महाराज से अपने हिसाब से चलते हैं। एंड वी रन लाइक ए मैड मैन टू फॉर वर्ल्डली प्लेजर, और दिन ब दिन और दुखी होते चले जाते हैं क्योंकि सही पथ पर नहीं थे। अब तो राजपथ मिल गया है। इन 3 दिनों में हमको विधि भी मालूम हो गई है। इस मुरली राजयोग के द्वारा राजपथ पर चलकर हम अपना सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन टू ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में बढ़ेंगे। तो आज की मैंने ये करंट एनालिसिस एज ए साइंटिस्ट आपके समक्ष में रख रहा हूँ। अगर हम लोग आध्यात्मिकता से विमुख हैं, आध्यात्मिक से शून्य हैं, लेकिन कोई ना कोई व्यक्ति, कोई चाहे रोटरी क्लब में हो, लाइंस में हो, कोई अस्पताल चलाता है, कोई कैंप चलाता है, कोई विद्यालय चलाता है, आध्यात्मिकता से शून्य होकर जो ऐसे लोग जब करते हैं तो बहुत सफल भी होते हैं और उस सफलता पर अपने सद्गुणों पर मुग्ध हो जाते हैं। वो अपने आप को लोक सेवक के रूप में देखना शुरू कर देते हैं।
उनको आशा होती है कि लोग उनकी प्रशंसा करें, उनको अप्रिशिएट करें, उनको रिकॉग्नाइज करें, अपने नियम बनाना शुरू कर देते हैं और इस प्रोसेस में उसके बहुत से उनके शत्रु पैदा हो जाते हैं क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी से विहीन थे यहाँ पर। तो ऐसे लोग बजाय लोक सेवक बनने के लोक विनाशक बन जाते हैं और क्योंकि स्पिरिचुअलिटी से विमुख हैं, दे आर डिप्राइव्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, इसलिए उनमें पोलाइटनेस, मॉडेस्टी और सेवा भाव की कमी होती है, यहाँ तक कि वो अपने आप में कुछ सुधार भी नहीं ला सकते हैं। अतः हमें क्या आवश्यकता है? रिसर्च टू डेवलप स्पिरिचुअलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी इन रिसर्च टू प्रोड्यूस बेटर ह्यूमन बीइंग। अच्छे मानव कैसे बनाएं, अच्छे क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे हो। जितना भी रिसर्च साइंटिस्ट हैं, जितना वर्ल्ड में अनुसंधान हो रहा है, सबका एक लक्ष्य है, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, दीर्घ जीवन हो, सुखी जीवन हो, शांतिपूर्ण जीवन हो। इस दिशा में मैं लगभग 20 वर्षों से ध्यान के क्षेत्र में जुड़ा हूँ। मुझे इस साधना से क्या लाभ हुआ और किस प्रकार से मैंने 2 अद्भुत पेटेंट्स और विद्याएं डेवलप की, ये आपके समक्ष मैं इसमें प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इतना महान साइंटिस्ट, देखिए साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट वो कहता है, जो रमेश भाई हमेशा कहते रहते हैं कि आध्यात्म विज्ञान सिक्के के 2 पहलू हैं। वो भी कहता है कि विज्ञान और साइंस जो है ये अलग से नहीं है, ये तो मॉरल फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी का दूसरा अंग, दूसरा पहलू ही है। हम जीवन में क्या आचार संहिता होनी चाहिए, क्या हमारा आदर्श होना चाहिए। हम जितने भी हैं साइंटिस्ट मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में इक्विपमेंट बनाते हैं, नई मशीन बनाएंगे, आजकल तो स्टेप्स एंड रिसर्च कर दी है, डॉली पॉली से लेकर 100 जैसे कौरव पैदा हो सकते थे, हम कर सकते थे, लेकिन इसके साथ में जो ह्यूमन बिहेवियर होना चाहिए, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुचाय, कल्याण की, मंगल की भावना होनी चाहिए, उससे हम लोग विहीन हैं। उस दिशा में क्या करना चाहिए, क्या डायमेंशंस होना चाहिए हमारे आचार संहिता के, हमारे इथिक्स के होने चाहिए। जब हम आध्यात्मिकता से विमुख होते हैं तो देखिए क्या होता है कि चाहे चैलेंजर एक्सप्लोजन हो, दिल्ली मेट्रो रेल का हो, कॉमनवेल्थ गेम हो, चाहे 2G घोटाला हो, कोल का ये सारी चीज़ें जितनी हैं ये इसीलिए हैं कि वी आर नॉट हैविंग दैट ब्लिस, एंड दैट ब्लिस जो आनंद की अनुभूति, जिसे मैं कहना चाहता हूँ, इस विधि से स्वतः आपको इन कार्यों के एक अलार्म देगी ऐसा काम करने के पीछे। एक मैंने ये निर्णय निकाला है, दिस इज़ माई कंक्लूजन। आज इंडिया विनाश के कगार पर थोड़ा जो खड़ा, उसका कारण क्या है? उसमें 3 लोग, बिजनेसमैन ने, क्रिमिनल्स ने और पॉलिटिशियंस ने हाथ मिला लिया है। तीनों लोग, एक सफल क्रिमिनल है तो पॉलिटिशियन बनना चाहता है, एक बिजनेसमैन सफल है तो पॉलिटिक्स में जाना चाहता है। क्रिमिनल के पास पैसा है, पॉलिटिशियन के पास पैसा है तो नए नए इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेगा, विश्वविद्यालय खोलेगा। उन विश्वविद्यालयों में इथिक्स, वैल्यूज़, स्पिरिचुअलिटी का अभाव है। उस दिशा में क्या होना चाहिए? इसलिए देखिए मेरी लास्ट लाइन देखिए यहाँ पर कि द फेल्ट नीड फॉर राइटिंग ऑन इथिक्स विच कुड हेल्प इन सीकिंग बेटर वेज ऑफ हैंडलिंग दिस सिचुएशन। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो सिब्बल साहब ने अभी की है, उसमें भी उन्होंने इथिक्स, मॉरलिटी को, मैं IIT की कोर कमेटी में हूँ। अभी मैंने अगले वर्ष से 6 महीने का एक कोर्स स्पिरिचुअलिटी पर, बिजनेस पर, इथिक्स पर किया है, जो वो IIT वहाँ पर मान गई है। दिस इज़ व्हाट वी हैव टू डू हियर। तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है इसका, स्पिरिचुअलिटी का, इथिक्स का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है? मैं बड़े बड़े उद्योग घरानों में गया, चाहे टाटा ने, अपने बिरला ने, JK ने जगह जगह मंदिर बना लिए हैं। सब लोग बड़े स्पिरिचुअल हैं, 2-2 घंटे सब पूजा करते हैं, मंदिरों में जाएंगे वहाँ पर। लेकिन जब इनके संस्थानों में हम जाते हैं तो एक लॉ ग्रेजुएट है, एक MBA है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, और किस तरीके से हमें को टैक्स को वेट करना है, क्या करना है, किस प्रकार से करना है, वो सारे कार्य करते हैं। प्लीज़ नोट माई दिस सेंटेंस। धर्म के नाम पर, चाहे मुस्लिम हो, जिहाद के नाम पर, चाहे 33 करोड़ हमारे देवता हों, हम लोग अलग बटे हुए हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। ऑल रिलीजियस पीपल कैनॉट बी स्पिरिचुअल। सारे धार्मिक लोग आध्यात्मिक नहीं हो सकते हैं, लेकिन सारे आध्यात्मिक लोग धार्मिक होते हैं। ऑल स्पिरिचुअल पीपल बाउंड टू बी रिलीजियस, बट ऑल रिलीजियस पीपल नेसेसरली नॉट टू बी स्पिरिचुअल। तो मित्रों, ये मेरा एक दूसरा कंक्लूजन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हम 7 तरह के पाप कर रहे हैं। ये 7 तरह के पाप हमारे समाज में क्या हैं कि बिजनेस विदाउट मॉरलिटी,
पैसा कमाए जाओ, कानून के शिकंजे में मत पड़ो, टैक्स के शिकंजे में मत पड़ो। पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स, कोई राजनीति तो रही नहीं, कूटनीति हो गई है। कोई कभी भी फ्लोर क्लास कर सकता है, क्योंकि वो आध्यात्मिक से विहीन है, उनका लक्ष्य कुछ और आगे। यहाँ पर एजुकेशन विदाउट कैरेक्टर, सारी फोटोकॉपी रिसर्च, ट्यूशन रिसर्च, कोटा वगैरह में क्या हालत है। वर्शिप विदाउट सेक्रीफाइस, हेल्थ विदाउट, ये 7 तरह के मैंने यहाँ पर जो दिया है, मैं सोचता हूँ ये कारण है। अगर ये कारण इसी प्रकार से रहे तो देश कहाँ जाएगा, क्या स्थिति होगी। कोई ना कोई डिजास्टर आएगा। बाढ़ खत्म नहीं होती, सूखा आ जाता है, सूखा नहीं होता, भूकंप हो जाता है। तो हमें किससे, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसका हमारा थीम है इस सेशन में, न्यू ऑर्डर बनाने के लिए हमें फाइट करना है। हंगर पावर्टी, इलिटरेसी, डिजीज़, इतने तरह के जो हमारे चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस की दिशा में हमें काम करना है, तभी हम इस दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। क्या करना चाहिए इसका। डॉक्टर कलाम ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए एक ये विज़न 220 डॉक्यूमेंट एडिट किया है। हम साइंटिस्ट भी उसके पार्ट थे, और ये हमारे 5 चैलेंजेस जो हैं, कैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, खाद्यान्न सुरक्षा, और 2 जो इन्वायरमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, सेफ्टी है, जहाँ पर आप सभी का योगदान है, इस प्रकार के सेमिनार का योगदान है, यहाँ पर आवश्यकता है। हमें इस डेवलपिंग इंडिया को डेवलप्ड इंडिया में कन्वर्ट करना है। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए। और इसके लिए इंजीनियरिंग एथिक्स 20th सेंचुरी में हमने क्या किया है। कार से लेके, मोबाइल से लेकर के, WMD स्टैंड्स फॉर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस, स्पेस क्राफ्ट, डिस्कवर्ड न्यू स्टार्स तक लाए हम पहुंच गए हैं। लेकिन इस विज्ञान के युग में देयर आर सर्टेन नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑल्सो। व्हाट आर दोज नेगेटिव एस्पेक्ट्स। स्वामी जी कहते हैं अगर इस भारतवर्ष को हमें ठीक करना है तो 2 ही कानून हो सकते हैं, 2 ही कोड ऑफ कंडक्ट हो सकते हैं। एक तो बाई लॉ कि यहाँ पर पुलिस हो, डंडा से काम किया जाए, या बाई मॉरलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी, बाई अपनी आत्मा को पहचानना, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन टू ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन। उस सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, इस आत्म कल्याण से विश्व कल्याण के लिए ही हम यहाँ पर आए हुए हैं, और इसी दिशा में हमको आगे करना है। देखिए 2 विश्व का पतन कैसे हुआ। वर्ल्ड इथोस, लैक इन स्पिरिचुअलिटी एंड हॉलिस्टिक अप्रोच। कितनी महान सभ्यता था ग्रीक की सभ्यता, लेकिन वहाँ इमॉर्टेलिटी पर तूतन खामन मम्मी में जाते हैं तो सैकड़ों दास दासियाँ भी जीवित उनके साथ दफना दी जाती हैं। रोमन सिविलाइजेशन जहाँ इतने पिरामिड्स बने, सब कुछ हुए, लेकिन जूलियस सीजर को जब ब्रूटस खंजर मारता है, ब्रूटस यू ब्रूट, वो नष्ट हुई। उसका प्रमुख कारण था कि वहाँ पर कितनी क्रूएलिटी थी। एंड व्हाट, जीसस तक को उन्होंने क्रूसीफाई कर दिया, ये हालत थी वहाँ पर। तो लेकिन अगर हमें चाहिए है तो एक्सेलेंट पीपल वांट एक्सेलेंट कंपनीज, एक्सेलेंट कैरेक्टर, और वो एक्सेलेंट ईच व्यक्ति का निर्माण ऐसे विद्यालयों में, ऐसी जगह पर ही होगा, तभी हम आगे जा सकेंगे। फ्रेंड्स, लास्ट सेंटेंस, मोरालिटी इज स्टिल लॉ ऑफ द यूनिवर्स। आप चाहे माने चाहे नहीं माने, लेकिन हमारे अंदर ये होना बहुत ही आवश्यक है। भारतवर्ष क्यों सजीव है। भारतवर्ष पर 1200 वर्षों तक मुगलों का और अंग्रेज़ों का शासन रहा। इसके बावजूद भी हमारी आध्यात्मिकता के कारण हम अभी भी भारतवर्ष जो है विश्व गुरु के लिए, वर्ल्ड लीडर के लिए, स्पिरिचुअल लीडर की दिशा में बड़ी तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है। टाटा जी ने इतने सफल हैं, उनके टाटा कोड ऑफ कंडक्ट हैं, उन्होंने 25 आर्च संहिताएँ की हैं, जिसमें एथिक्स, वैल्यूज़ और स्पिरिचुअलिटी को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम के नया विषय, जिसमें सारे कारपोरेट लोगों को अस्पताल बनाना, स्कूल बनाना, मंदिर बनाना, आध्यात्म ध्यान के केंद्र बनाना, ये इसी दिशा में टाटा जी ने सबसे पहले टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च हो, या बेंगलोर का टाटा कॉलेज हो, या टाटा का अस्पताल कैंसर का हो, इसी दिशा के ये बाई प्रोडक्ट है। तो स्पिरिचुअलिटी एट ग्लोबल इश्यूज़ में 21st सेंचुरी में हमें क्या करना चाहिए। हमको जो बैलेंस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में लाना है, और मुझे कहना चाहूँगा, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ, हमारी बीके अंबिका जी ने एसेंशियल्स ऑफ स्पिरिचुअल जो स्किल्स डेवलपमेंट में किया है, उसी बात को थोड़ी मैं स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लेट अस फेस डिफिकल्ट चैलेंजेस, विन देम ओवर विथ कंबाइंड फिलॉसफी, पाथ,
करेक्टर, राजपथ आपके पास में है, आपके पास मेडिटेशन है और आपका चरित्र निर्माण आपके साथ में। इसके लिए क्या करना चाहिए? आत्म रूपांतरण करना है, सेल्फ प्योरिफिकेशन करना है, मेडिटेशन के रास्ते से हमें आगे बढ़ना है। इतने प्रकार के टेक्निक्स हैं। सारी टेक्निक्स का एसेंस क्या है? इन ऑल स्कूल दे स्टार्ट विद मेडिटेशन, स्टार्ट विद प्राणायाम। श्वास कैसे देखना है? श्वास देखना हुआ, या आपने जो राजयोग में कहते हैं कि आप ज्ञान सरोवर को देखो, इतनी इन्वेंट्री, इतने पेड़ हैं, इतने वृक्ष हैं, अपनी चिंताएं छोड़ करके अपने इस हॉल में, हारमोनी हॉल में आ गए। फिर अपने शरीर को देखो, अपने शरीर के अंदर बायोकेमिकल, मैग्नेटिक या फिजियोलॉजिकल जो भी चीज़ हो रही है, सांस को देखो और पूरे शरीर को देखते देखते आगे चक्र पर आकर के जो चमकता हुआ सितारा है, जो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है, वहाँ पर देखो और कनेक्ट करो विद द सुप्रीम, विद द बाबा, हाउ यू आर गेटिंग एनर्जी, हाउ यू आर गेटिंग योरसेल्फ चार्ज। दिस इज व्हाट द बेसिक प्रोसेस इज ऑल मेडिटेशन टेक्निक्स। अब मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ कहने जा रहा हूँ, कृपया इस पर ध्यान दें। हमारी वैदिक प्रार्थना है कि ओम पूर्णमिदा पूर्णमिदम पूर्णात इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। भगवान ने, सुप्रीम सोल ने हमको भी एक आत्मा के रूप में पैदा किया है और कोई भी अंतर नहीं है। वही रूप है, वही आत्मा है, वही शरीर है, वही वर्चूज़ हैं, वही क्वालिटीज़ हैं। फिर हम अच्छे ये काम, क्रोध, राग, द्वेष, मोह हमारे मन में क्यों आते हैं? क्यों हम भी सुप्रीम सोल की तरह बाबा के निकट पहुंचने के प्रयास में क्यों भटक जाते हैं? उसका कारण है कि वी लैक, व्हाट डू वी लैक? डिविनिटी एंड स्पिरिचुअलिटी। वो डिविनिटी और स्पिरिचुअलिटी को कैसे बढ़ाएं, कैसे इनकलकेट करें? एक देखें यहाँ पर कहते हैं आनंद स्वरूप हो जाएं, सच्चित आनंद का स्वरूप हो जाएं। सत माने क्या होता है? सत माने जो हम बता रहे हैं यहाँ पर, पहला सत्य कि आप पहचानो अपने आप को। पहला सत्य है कि आप अजर, अमर, अविनाशी एक आत्मा हो और परमात्मा हो, इसको पहचानो। और फिर साधना द्वारा उस चैतन्य शक्ति का अनुभव करो कि आप में वो चैतन्यता, वो शक्ति आई। और जैसे ही वो चैतन्य शक्ति आएगी तो आपकी कनेक्टिविटी होती, आपको आनंद आने लगेगा। उस एक क्षण के जो आनंद को, सत्य को, चित्त को, आनंद को करते सच्चिदानंद स्वरूप बन जाएंगे। और जैसे ही वो एक क्षण का, कुछ सेकंड का, कुछ मिनट का आपको अनुभूति होगी, दैट विल रिजल्ट इनटू क्रिएटिंग द इंटेलिजेंस, एंड दैट क्रिएटिविटी, दैट इंटेलिजेंस लीड्स टू न्यू आइडियाज, न्यू रिसर्च, न्यू इनोवेशंस। मेडिटेशन की इन साधनाओं पर मुझे किस प्रकार से जो संदेश मिला, जो मुरली मिली, मैसेज मिला, मैंने 2 महान रिसर्च की हैं जो आपके सामने एज ए केस स्टडी यहाँ पर आपके पास रखने जा रहा हूँ। तो क्या होता है ध्यान की अवस्थाओं में? लोग कहते हैं हमारे सनातन धर्म में कि ये बाबा देखो ब्रह्म लोक में विहार कर रहा है। ब्रह्मा के 4 मुख बनाते हैं। क्या होते हैं ब्रह्मा के 4 मुख? होते हैं अनंत मैत्री, अनंत करुणा, अनंत मुदिता, अनंत समता, ऐसा भाव आ जाता है। अब देखिए प्रमुख बात जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में होती है, जो सूर्य में हो रही है, पूरे ब्रह्मांड में हो रही है। जब आप साधना करते हो, अगर मैं जरीर सा एक टुकड़ा अभी विद्या बहन के शरीर से लूँ, इस लकड़ी से लूँ, चश्मे से लूँ, यहाँ लूँ और सारे का एनालिसिस करके एज ए साइंटिस्ट देखूँ अंदर, तो यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, उस एटम के अंदर क्या मिलेगा? न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, और उसके चारों तरफ क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब इलेक्ट्रॉन होंगे, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसको नष्ट करना है पहले। फिर अंदर जाओ तो आज साधना में बड़ा अच्छा लगा, आज भोजन बड़ा अच्छा था, आज मुरली बड़ी अच्छी थी। ये प्रोटॉन की स्थिति, पॉजिट्रॉन की स्थिति, इसको भी निर्जरा करो, इसके भी आगे बढ़ो तो न्यूट्रल स्थिति आ जाएगी। उस न्यूट्रल स्थिति, न्यूट्रॉन से ही न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में हम करते हैं और एक्सप्लोजन करके जो प्रतिक्रिया करते हैं, तो अगर राग विहीन, द्वेष विहीन, मोह विहीन चित्त हो, न्यूट्रल स्थिति हो, सारा माइंड को प्योरीफाई करें, नेगेटिविटी निकाल दें, उसके बाद आप देखेंगे रिसर्च के लिए क्या आइडिया आते हैं, क्या सच्चित आनंद, आनंद स्वरूप, घन स्वरूप स्थिति हो जाती है, जिसका बहनें हमेशा बार बार जिक्र करती रहती हैं। एंड वी रीच टू इंद्रियातीत अवस्था, एक क्षण के लिए आती है, 2 क्षण, उस क्षण को बढ़ाना है साधना द्वारा। ये हमारा, अगर आप ठीक से करेंगे तो देखो ये होता जो मुझे हुआ, आपके प्राणायाम, श्वास की गति कम हो जाएगी। कुत्ता सांस लेता है 12 साल जीता है। सांस जितनी दीर्घ, स्लो, डीप, रिदमिक होगी, उतना दीर्घ जीवन होगा। ब्रह्मा पिता ने लिख दिया है इतने करोड़ अरब बाद सांस लेना है। अब उतनी सांस जल्दी जल्दी क्रोध में, सेक्स में, वासना में, बुराई करने में आप खर्च कर दो, या धीरे धीरे करके साधना द्वारा उसको बढ़ाओ।
तो जिसको अभी हमारे इनमास के लोग कह रहे थे कि जो एक्टिविटी हमारी बढ़ती है कि इलेक्ट्रिकल ब्रेन एक्टिविटी, आपकी निद्रा, भूख, क्रोध, मैत्री, करुणा, स्वास्थ्य और दीर्घायु बढ़ती है, ये मैंने अनुभव किया। मेरी डिसीजन एबिलिटी इतनी बड़ी हो गई, अच्छी हो गई कि कभी क्रोध नहीं आया, द्वेष की बहुत कम हो गया इस साधना के द्वारा। तो नौ प्रमुख बात कह के मेरी अपने 2-3 स्लाइड्स से समाप्त करना चाहूँगा। माई एक्सपेरिमेंट्स विद मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी इन रिसर्च। क्या हुआ, 71 वॉर के बाद में डेजर्ट में ये देखा जितने बैटल फील्ड में लोगों के सोल्जर नहीं डेथ हुए, उससे ज़्यादा डेथ वाटर बाउंड डिजीज से हुई। अभी इतनी बारिश हुई है, कॉलरा फैलेगा, मलेरिया फैलेगा, कुंभ मेले में जाओ, नासिक में जाओ, बॉम्बे में लाइन फूट जाए तो वाटर बाउंड डिजीज होती है। और जब बुखार आता है तो डॉक्टर पैरास्टामॉल, क्रोसिन, मेटासिन से शुरू करेगा, दूर नहीं होगा, फिर बोलेगा छींक आ गया है, एंटीबायोटिक दे दो, ठंड लग रहा, मलेरिया दे दो। 7 दिन बाद डॉक्टर बोलता है नहीं ब्लड कल्चर कराओ। अरे आपको तो टाइफाइड है, ब्लडी फूल, व्हाट यू हैव बीन एक्सपेरिमेंटिंग लाइक ए गिनी पिग। हमको 7 दिन तक हमारे शरीर को आपने गिनी पिग बना दिया। पहले दिन शुरू में क्यों नहीं बताता कि टाइफाइड है? डायरेक्टर जनरल आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज आस्क मी, डॉक्टर राम गोपाल जैसे फौजी लोग होते हैं, ब्लडी विल आई विल हैंग यू, टेक एनी अमाउंट ऑफ मनी, रिसर्च, पैसा। मुझे 3 दिन तक ब्लड कल्चर करके 3 दिन में आप बताएगा, 7 दिन में टाइफाइड बताएगा, तो पाकिस्तान, चाइना दुश्मन चढ़ के दिल्ली, माउंट आबू, कलकत्ता सब जगह पहुंच जाएगा। आई वॉन्ट मॉर्निंग टू इवनिंग टेल मी दिस वाटर, दिस ब्लड, दिस यूरिन, दिस कोका कोला, दिस फूड हैज़ गॉट टाइफाइड जार। फ्रेंड्स, मैंने वो रिसर्च किया। नाउ आई ब्रॉट फ्रॉम 3 days to 4-hour test. WHO recognized me. They sent me all over the world and all WHO collaborative centers. क्या किया मैंने कि 3 दिन 7 दिन में जो बैक्टीरिया ग्रो करता है, उस पानी को, सैंपल को लो के बैक्टीरिया को अच्छा खाना, कार्बोहाइड्रेट मिल जाए, प्रोटीन ज़्यादा मिल जाए, मिनरल्स ज़्यादा मिल जाए, ग्रो करने को मिल जाए। जो ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव हमारी माइक्रोबायोलॉजी की भाषा में होती है, जो अनवांटेड बैक्टीरिया है ऐसा डाल दो वो नष्ट हो जाए, और 4 घंटे के अंदर जो लक्षण आपके शरीर में आते हैं वो 4 घंटे में लक्षण आ गए। और ये पेटेंट करके सब जगह पूरे वर्ल्ड में जगह जगह इसका मेरा पब्लिकेशन है। टेक्नोलॉजी फ्यू करोड़ में मार्केट में भी सेल पर है। दूसरा मेरा रिसर्च में जो आया ये सारा मेडिटेशन के समय ही आया कि ऐसा करें तो क्या होगा, ऐसा करें तो क्या होगा, विच आई ट्रांसलेटेड इनटू ग्राउंड रियलिटीज़ बाय रिसर्च। दूसरा मेरा ये हुआ अटैक, एक दिन मुझे डिफेंस हेडक्वार्टर से कराया गया, जितने लोग यहाँ बैठे हैं इन सब लोगों को जहाँ बाबा चले थे कराची के आउटस्कर्ट डेजर्ट सैंड के धोरों पर मिडनाइट में डिप्लेन करना, इन सबको ले जाना, इतने कमांडोज को वहाँ पर ले जाना, ले जाओगे। अरे रात को 12 बजे दुश्मन के इलाके में ले जाएंगे, पहले तो हवाई अड्डा बनाना पड़ेगा, हवाई अड्डा बना के इतना सिविल स्ट्रक्चर करो, ये करो, फिर ले जाओ, कितना समय लगेगा? उतने समय में तो रडार में देखेगा, मिसाइल लगाएगा, जहाज, आदमी सब मर जाएगा। एंड फ्रेंड्स, कैन यू बिलीव इट, आई डेवलप द टेक्नोलॉजी, हाउ मच इट टाइम्स इट शुड टेक एनीबडी, एनी वाइल्ड गिलेस, दुश्मन के इलाके में रात को 12 जाना, हवाई अड्डा बनाना, डिप्लेन करना। आई डेवलप द टेक्नोलॉजी विच टुक लेस देन ए मिनट। आर्मी चीफ, एयर चीफ दोनों एक जहाज में जोधपुर आए, जनरल वैद्य थे, एयर चीफ मार्शल कात्रे, व्हाट यू हैव डन इन दिस टेक्नोलॉजी। जो क्योंकि होता क्या है कि चॉपर से अगर आदमी को डिप्लेन करना है, इतना धूल उड़ता है कुछ दिखता ही नहीं नीचे, रस्सा फेंक के एक आदमी स्लिथरिंग करके नीचे आता है, और एक आदमी 50 आदमी नीचे आना है, आधा घंटा लगेगा, आधा घंटे में तो उड़ा देगा आपके जहाज को, क्योंकि अनलेस यू रिमेन 70 फीट अबव द ग्राउंड, इतना धूल उड़ता है, विजिबिलिटी जीरो होता है, मिट्टी का होता है। मैंने उसी जहाज में एक केमिकल भरा जो एरोनॉटिक इंजीनियरिंग से कैलकुलेट किया, और 55 सेकेंड्स में 150 फीट बाई 100 फीट में 2 to 4 mm थिकनेस रॉक आउट हो गया, और एक किरका भी नहीं उड़ा, जहाज सॉफ्ट लैंडिंग किया। अलॉन्ग विथ चीफ्स दे कमेंडेड मी, दिस ऑल्सो आई गॉट this airborne mechanical spraying system. It is being used all over there in Army and Air Force. Last 2 slides. Friends, what I wish to conclude here, the average level of moral behavior has not improved. There is no evidence that so-called civilized societies are morally superior to so-called primitive societies. गाँव में जाओ, अभी राम राम करेंगे, नमस्ते करेंगे यहाँ पर। The progress that we call in civilization is an improvement in technology, science and impersonal manipulation of power. It is not an improvement in morals, that is ethics and spirituality. That's what we need to improve, then we can become the Vishwaguru, World Guru, Raj Guru. Last slide. So that's what I wish to appeal to you.
let us continue research in spirituality by practicing Indian work ethos at spiritual centers like Brahmakumaris and be virtuous, ethical, and spiritual. I express a deep sense of gratitude to DRDO and Brahmakumaris for giving me this opportunity to share. I was director of materials to Dr. Kalam. So from materials to metaphysics has been a great journey. But this Raj Yoga has helped me a lot. Thank you very much. Thank you very much, brother. You have his research is based on meditation. Only with the help of meditation, as he urged, is really very much essential to everyone to make a research, and that should start from within. He has given a very nice report of his researches and the results. Thank you very much once again, brother. Now, I request Dr. M.G. Hiremath, who is a professor and head of the Department of PG Research Programs in Rani Chennamma University, Karnataka, Belgaum. He is also a program officer in IRDP, a moderator and examiner for research papers in accounting at Annamalai University, Chennai, and the American Accounting Association, New York. He is also a resource person to FBAS, the Karnataka Government Municipal Department. Now I request Dr. M.G. Hiremath to give his experiences on this research and meditation. Om Shanti. So we are on the last day of the sessions, and I am feeling now I have become a full-fledged doctor to prescribe any person whoever approaches me with any problem. Take one pill Raj Yoga in the morning, you take second pill in the afternoon Raj Yoga pill, then in the night before going to sleep you take another pill Raj Yoga, so that cures all your diseases. I hope most of the persons present here will agree with me, and they have also, I hope, have become doctors along with me, and I hope they endorse it by raising their hands. Okay, thanks. And please keep it up, that Raj Yoga practice. And as for all the previous 3 days deliberations have been presented, have proved that Raj Yoga or meditation has a great value in it and energizes the individual, gives us great knowledge and strength, and above all, inner strength is the greater strength. Even that is a greater defense for an individual. At the time when we are considering the defense of a country, we shall think of defense of an individual first. Okay, and that these deliberations, one thing I could identify, that all other aspects and all other areas were covered. In 18th and 19th century only, see, since I am in a commerce and management education field, I have identified that one item of research which was done during 18th and 19th centuries by the great researchers like Henry Fayol and F.W. Taylor, Elton Mayo, Abraham Maslow, and all that, they revealed that every individual has relation with the materials and the things he is using. See, if we take at the childhood, the baby tries to catch the toy it likes, and it wants to have only that toy amongst all of the other toys. And at the, say, student stage, one wants to have the books or things that are liked by most. And as such, in a family life, that the spouse preserves the suit given by his father-in-law or mama during the marriage till the end. So, with a great attachment to those items and materials, one preserves.
So this psychology, in industrial psychology and management, it is a greater field of research and innovation. Every material, one we are using has an association. The seats we are sitting have an association, have something to pay back to us in return. So that is with the sense of gratitude. So this research were conducted in 18th and 19th centuries, and employees were instructed to give instructions to those tools rather than quarreling with the tools. See, bad man quarrels with the tools. Okay, that component in the individual psychology was identified long back, say in the 18th century, and these researchers advocated them and advised them, you speak to your tools and instruct your tools, so that it is in no way different to the meditation we are doing and creating the vibrations, and that all changes the environment. So in our, say, institution, we have, say, hardly 1 or 2% of the resources what we are finding here. But from day one till now, all these things, electronic systems, lighting systems, music systems, speakers, or these seating arrangements, everything is, see, supporting on its own. But in our institution, they say sometimes when such a function is there, either mic goes off, or electricity goes off, or the projector goes off. So all these things speaks of the vibrations that have been created in this environment. To support this, I'll give an experiment of my own. See, I am not from long time into this organization. So only since 2008 I am into the organization. When I came to Ahmedabad for a conference, I got an opportunity to casually to visit here and gone deep into the aspects of their philosophies and all that. And that very much convinced me. And after going back to my native place, see, there was, during rainy season in Belgaum, it is unpredictable, heavy rains, and that caused 30, 40 villages to submerge in the waters. People were stranded, and say, weather reports were such that another 10 or 15 days there will be heavy rains, and that will further may cause any great damage. So that pained me, and I tried to experiment that, how that vibrations reach the places. Then I told my students who were sitting in my class, then I told them, you see, if you are on the road and a cyclist falls down, what do? We'll go and help him. And if a person meets with an accident, we'll go and help him, lift him and support him, give him all first aid and all that. Now, I asked the question, when such things, as you are reading in newspaper, like such a devastating disasters and mishaps are taking place, can you help them? They are at different place. No, sir, we can't do. They are at different place. They are different villages. They are stranded in water, and we cannot do anything. I told them, friends, yet you can do it, and you can help them being here, I said. Then I gave a meditation instruction, and the students literally did that for that day in the class, and I instructed them at the end of the class to do it after going home for next 21 days. And you will find the result, the things will automatically come down and control. Then as I told, see, students are very honest and humble to their teachers, and particularly loved teachers, instructions they follow very much meticulously. I am very happy to have such students with me. And they did that. For her, probably it would be a second day or a third day, rains receded, water level in all the reservoirs receded, and gradually it came down. And I myself got convinced that even sending vibrations from the place wherever we are to a person who is in, say, a remote area, needs some of our help, we can do that by sitting here through sending meditations. So that is how we can create vibrations and make the resources and materials of a great help for us. So that in see, organizational behavior, this is there, that every worker should talk to the tools and talk to the materials, talk to the seats and chairs they are sitting. But only politicians, we see that they are, say when they are sitting before, they look to their chair and say, yes, you be there only with me, and don't go for any other person. So, see, it is all a thing. But in reality, we must have a gratitude for each and everything and each and every material that is at our service. So to support that, I have prepared some of the slides here, which I'll present it and quickly end it.
So that is what a gratitude quotient, please. So essence of holistic development of individual in the new world, it is through awakening and adopting of quotients in more better manner. So we find that quotients of an individual strengths are external quotient, that is money or wealth that one is having to support his needs and expenses, and intelligent quotient to support his knowledge and prove as a distinct from amongst all the other individuals. Emotional quotient, spiritual quotient, I need not highlight on all these things, but the gratitude quotient is more important, that has to be enlightened and adopted by all of us, that it is being, see what is it a gratitude quotient means? It is being thankful in return for whatever benefits or services we receive from a person or a non-person or materials, having regards for the other one giving it, that is for the counter side. And it is being indebted for anything and everything. It is in our culture to reciprocate. It is automatically, it is there with all of us. We do it as a part of our daily life, and it is being done mechanically without realizing its inner truths and strengths. Commonly used word is thank you. Whenever we receive some benefits or something, we say thank you. So, but in accounting terms, it is being indebted, and which has to be compensated by balancing the account. It is something more than that, saying only thank you. So it is balancing of account. When it comes to an account, we see physical account and non-physical account, which the means one and the same: material, tangible, visible, corporal, and akar and nirakar. So the accounts which are in the physical form, also another side, they are in corporal, individual form. So balancing of the physical accounting is done through debit and credit entries in the accounting statements. In non-physical forms or nirakar forms, debiting through submissions. See, that is inwardly when we submit for the other. As commerce man, see, we give demands for the scientists and researchers so that they develop the products and they develop the ideas and bring to the market. So today's world, we can say, entirely depends on the trade and commerce. And so therefore, unless we pay from our side, we don't receive something in return. We have to pay and get it. Otherwise, nothing is free in the nature, nothing free in the business or in our day-to-day life. So it is essential that we have to debit through our submissions and credit through pleasures and happiness. And that is in Baba's language. Very often I have come across with the term, balance ka jama karo. Okay. So we have so many values in us, which you have been known: love, compassion, care, share, gratitude. Amongst all these things, list of values in individual, these are identified. Around 26 to 30 such individual values are there, which obviously a distinct person follows that. So the gratitude quotient, now it is there in all of us. Out of the general survey conducted, irrespective of the sex and the age group, 92% of the people said, yes, we are grateful and we express our gratitudes. And this is very, comparing to other countries, it is less. And 27% of the people know why they do it and what happens. We mechanically do it, that we thank. Say, whenever somebody helps us, we say thank you, thank you, thank you, and all that. But we don't know its inner strength of it. And 8% of people ignore to do it and reciprocate it. It was duty and has done it. And 66% of the people think that it is a wasteful thought. We shall not waste our time on thinking on such aspects. So 34% of people value it as a very good practice in an individual, so that we must do it. So there is a need for developing a gratitude quotient in all of us. How do you value it? Of course, it's not possible to quantify. Such things we cannot quantify and cannot measure with any mathematical scale. It is essential for one's own transformation. But we agree, all of us, that it is very much essential for our individual development. What areas of life it helps? We don't know where it exactly helps. We can't point out like any laboratory experiment. But it improves our relationship in our day-to-day social life, and it builds up a goodwill, and it builds up an environment, and it creates a vibrations for the better world order. That is true. What I feel, it is only through Raja Yoga pill, what I advised in the beginning of my lecture: morning 1 pill Raja Yoga, afternoon 1 pill Raja Yoga, and
night one pill Raj Yoga. It is inwardly submission for the favors received. That is a gratitude quotient. We shall all develop it, and obviously, and we must do it, and with greater expectations, we shall hope to get better things in our future days. Thank you so much. I thank the organizers and the persons for giving me this opportunity to speak few words of my thought on this occasion. Thank you once again. Thank you very much, Brother Hiremath. It is really the gratitude quotient which we have to offer, and I thank him with that gratitude quotient. It was nice experiment he has done, and it's really a good research work. Now I request Brother R.S. Bhatia, who is a group director of ISRO TBC Bangalore. He started his career in 1976, and from his position, he now has developed himself as a deputy project director, and he played a key role in shaping ISRO's prestigious programs, and for this all we Indians are proud of it, we can say. He has served the terms both in India and also in abroad. In 1997, he switched over the program to program plannings, and he made different programs and also plannings for the national remote sensing and communication needs. Since then, he has been considered as a director for the Embassy of India as a counselor to ISRO, which has a single window to America. He also has visited many countries, many industries, institutions, organizations, government agencies of US region, and has built a very important business ventures ties up. His jurisdiction included USA, Canada, and Latin American countries. He has developed connections at a higher level, and he is very humble to say that he has acquired enough knowledge about HR functions, state of economy, state of industry, nationally and internationally, and now he is a program director, group leader or group director for ISRO, and he is having such a high post, and he also has experienced some better communication with the Supreme, and we will listen from his mouth only about his experiences. Brother R.S. Bhatia. Thank you, Vidya Ben. Behan, you say Behan here, not Ben, okay. Professor Hiremath has just now said that what is the prescription. So past 4 days, we have been listening to actually what we are. We are trying to diagnose as to who we are, and today even the prescription is given. So I'm very sure that this is the time to go. But believe me, I will not take much of your time, because in these 4 days, I think by this time we will all realize as to who we are and what we need to do in future. Only thing is, I have a couple of points to share with all of you. Actually, I recall 1981. It is the jungles of French Guiana, Amazon forest. European Union has developed their first rocket called Ariane. On top of Ariane is sitting one satellite called Apple, which was made with the 3 years of hard work, what we did in India. And that is our first communication satellite. Today we know the communication where it is. That is because we have started the communication technology in the country. Initially, I still remember a day